Hello. Good morning, everyone. Today class start. Screen share visual. Hello. Yes. Okay. So we start today. Coordinate system. Coordinate system. So first, you remember the simple 2D coordinate system, and in this relative subject, 3D coordinate system. So coordinate system. First, Cartesian coordinate system. Second, cylindrical coordinate system. Third, spherical coordinate system. And generalize for general curvilinear coordinate system. Suppose body in any shape, and then define general curvilinear coordinate system or orthogonal coordinate system. So we start first Cartesian coordinate system. So Cartesian coordinate system, we start with sharing this screen. First, Cartesian or rectangular coordinate system. First, Cartesian coordinate system. So you remember the Cartesian coordinate system. Diagram is visual. Three coordinates, right circular is x, y, and z. And according to coordinates, unit vectors represented here. Unit vector ax, ay, z. So suppose any point P, here coordinates x, y, and z.
So in any point P, find distance, vector distance of, जैसे कि वेक्टर के लिए स्टार्टिंग डिसीजन कर चुके हैं कि वेक्टर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, सरफेस फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। जो भी वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज है उसके अकॉर्डिंग हमको ये, क्योंकि हमको फील्ड में, इलेक्ट्रोनिक्स फील्ड में कौन कौन से हैं, स्केलर एंड वेक्टर, इसका मेन यूज एंड फाइंड फील्ड रिलेशंस। So first find distance between horizon to horizon start with 0, 0 coordinate. Some distance horizon to this point P. Our point P. So find vector distance according to this position. तो ये हमारा तो वेक्टर डिस्टेंस टू P, इसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट दिस पॉइंट P ऑन XY प्लेन, ऑन XY प्लेन। जैसे कि we know that plane represented in this XY plane, represented XY plane represented this coordinate, this plane X Y, ये प्लेन रहेगा when Z इक्वल टू 0। तो ये हमारा XY प्लेन रिप्रेजेंट करेगा, XY प्लेन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा XY प्लेन शो करेगा, ठीक है। सिमिलर इन्हें XZ Y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये हमारा Z X 8 Y इक्वल टू 0, तो ये हमारा ये वाला प्लेन हो जाएगा। थर्ड X इक्वल टू 0 YZ, तो ये हमारा YZ प्लेन कहलाएगा। यहाँ पर कौन सा YZ प्लेन, YZ प्लेन X इक्वल टू 0। तो इस तरह 3 प्लेन हमारे रहते हैं इसमें, XY XZ YZ। तो इसको हम प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट ऑन XY प्लेन, दिस पॉइंट P प्रोजेक्ट ऑन XY प्लेन। तो इसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं और सिंपली इसको इस पॉइंट पर कर लिए XY में प्रोजेक्ट करिए। और इस पॉइंट को यहाँ पर डायगोनली ऐड करिए इस पॉइंट को। ये हमारा ये पॉइंट हमारे क्या कहलाएगा, सपोज P डैश, ये जो पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंट है P डैश, क्लियर। ये वो P डैश और
यहाँ पर ये हमारा पी डैश पी और ओ पी। तो यहाँ पर ये जब हम डायगोनल इसको ये रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पर, अब हम ये क्लोज लूप हमारा हो रहा है, तो इसको फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस ओ पी फाइंड करना है, तो ये हमारा वेक्टर डिस्टेंस जो रहेगा ये वाला यूनिट वेक्टर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ओ पी ये। और यहाँ पर जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू वाई, इसके अकॉर्डिंग में डिस्टेंस यहाँ पर इसको ड्रॉ करें। तो ये पैरेलल टू एक्स ड्रॉ करने के लिए इसके पैरेलल इस पॉइंट पे हम इसको ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम इसको इस तरह से ऐड करें यहाँ से, तो ये इस तरह से ये डिस्टेंस को ऐड कर दिए यहाँ पर। सिमिलरली y के पैरेलल यहाँ पर इसको ऐड करें, y के पैरेलल इसको ऐड करें। तो देखिए अब इस डिस्टेंस हमको ये ओपी डैश फाइंड करना है, तो हमारा ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, x, और ये क्या कहलाएगी, y। ये क्या हो जाएगा, z। सो फर्स्ट पॉइंट, दिस डिस्टेंस x, this distance y, and this distance z। और यूनिट वेक्टर क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई, यहाँ पर यूनिट वेक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए वाई, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स, जिसमें यूनिट वेक्टर ए एक्स दिस पॉइंट, एंड for z direction unit vector represented as z. अब इस now find distance OP in vector form. So find this OP dash plus P dash P dash P। अब देखिए वेक्टर लेंथ आप फाइंड करिए, वेक्टर लेंथ, दिस वेक्टर लेंथ डायगोनल इसको ऐड किए थे, वेक्टर लेंथ ओपी डैश represented by both x and y। x वेक्टर यूनिट वेक्टर हमारे x यूनिट वेक्टर ये वाला ax, इस वजह से यहाँ पर देखें ये डिस्टेंस x है, यूनिट वेक्टर ax प्लस y ay। So this is the distance OP, this distance OP dash, and this is a z unit vector az। So simply find this diagonal length OP vector. Now in field using generally differential form, so we start differential elements. So suppose assume a small cuboid,
only things. Resistance. So this is a keyword. Suppose represented coordinates in a z direction, in a y direction and x direction. दोस्तों कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं. X direction, second one is the y direction, third one z direction. So coordinate x, y and z. Now represent a differential length. This in a according x length represented dx, according y dy, according z dz. So three distances to represented. This distance dx, इसको पैरेलल में यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहेगा dx, ये इसके पैरेलल में यहाँ पर है, and dy, ये dy distance dy, and this is also your dy, and z direction, this is in z direction, this is z direction, so represented dz or dz, dz. So now diagonal length, diagonal length, horizon, this point, horizon, this point, O, present, suppose here, and diagonal point P present here. Point P represent P here. So find point P, X, Y, Z. So now diagonal length O to P, इसको हम यहाँ से इसको कनेक्ट करें. Length, diagonal length, ये हमारा diagonal length OP. So in this point, OP, इस फॉर्म में जाएगा डिफरेंस. सपोज एज्यूम लेंथ DL, ये इसको हम DL से रिप्रेजेंट करें, DL इक्वल टू, फिर इसको इसी कनेक्ट डायगोनल इसको कनेक्ट करेंगे. तो डायगोनल कनेक्ट करने से हमारा ये यहाँ पर ये इसको हम डायगोनली इस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस पॉइंट P, so this way also represented by P dash. So our distance OP, so we start with O point OP dash plus P dash P. तो ये हमारा डायरेक्शन इस टाइप से इसमें रिप्रेजेंट है. ये हमारी वेक्टर लेंथ के लिए इसमें ये वैल्यू है.
So find OP, compare the fact same OP. So dx, distance dx. So start with dx plus dy with unit vector. So dx, unit vector ax, only length change, unit vector same, plus dy ay plus dz az. Okay. So this is represented by diagonal length in differential form. So yes, same dx ax dy ay dz az. So in a electrical field, use this distance for in various location. Find distance to vector charges or some to any other field. So use the Cartesian coordinate system this distance. So this is represented a differential length dl. So you can remember this differential length. Now in Cartesian coordinate, first differential length, second is differential surface. Second is a differential surface. So we start from this cuboid. Or so first, what is surface area? What is a surface area? How can define surface area? Surface area, first observe this front surface area. Right? So first coordinate in this y direction, second in a z direction. Clear? So you know surface area is a scalar or vector. So we how can verify this is a vector? We know that surface area is a vector. Clear? Hello, Ankita Singh. Ankita Singh. Hello. Hello. Ankita Singh. Hello. हाँ अजय कुमार. अजय कुमार. Ajay Kumar, listen me. Ajay Kumar. Anupam Rajat. Hello. Yes, sir. So we know that the surface area is a vector. So how can verify this is a by using a vector unit vector applications. Suppose this is हमारा dy distance. This is a dz. So surface area ds. सरफेस एरिया फाइंड करना है. ये हमारी लेंथ की है, ये हमारा लेंथ, फर्स्ट लेंथ. सो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया. सो सपोज फाइंड फ्रंट सरफेस एरिया. सो रिप्रेजेंट ए ds, डिफरेंशियल फॉर्म में ds, here denoted by f, front surface area. So देखिए first observing this dy, dy distance and unit vector ay, unit vector ay. Second distance dz az, dz and az. Now apply unit vector quantity.
Now apply application of unit vector. So AY, AZ, AY and AZ is a unit vector. Suppose apply vector identity dot product. Suppose apply dot product. So dot product, according dot product, this is a AY AZ equal to anyway dot applications dot product AY AZ equal to 0. So AY dot AZ equal to 0. So surface is nothing. DS equal to 0. Not find here. Now apply cross product. Apply cross product. So AY cross AZ. This is represent AY cross AZ unit vector. AY cross AZ equal to AX. This is a unit vector. So this is a find this surface area. So here represent D Y D Z unit vector AX. AX is a positive, so it front surface area. You know this AX is our front surface area. So this is a front surface area. So here DSF represented front surface area. So this is application of unit vector applications. So this is a cross product. You remember this is a cross product. So this is the area in a cross product here in this area. Similarly, right side, this is a surface area represented BS R. This is a surface area BS X, and offside DS Z, and opposite side DZ D. इसमें ये बॉटम में जाएगा, ये टॉप पर है, एंड DSR राइट लेफ्ट, DS X in front and back. So similar, find right side DS right side. So two sides here DX and DZ. Unit vector AX and AZ. So apply direct here. DX DZ. So X unit vector AX and unit vector AZ represented AY. So here unit vector EY. EY positive. So this is right side. This is a right side. Right side. So this is a first surface area, and this is second one surface area, and third one top area. Find top area. So DS F closed. Top side. So see this here, sides dx and dy, dx and dy, and unit vector ax and ay, product of ax ay unit vector
AZ. So the positive. So here represent Dx, Dy, AZ. So three surfaces calculated here, and similar in opposite side, same surface area, and unit vector represent a negative, so just a back 180 degree. How can this justify? Suppose minus AX represent here opposite of the front's area. Minus AY represent opposite of AY. Similarly, AZ opposite of this top side. So 6 surfaces area present. So here 6 surface area you calculated and verify simply. You learn before cuboid. So find same surface area by using this formula. Same surface area by this using a same formula. So at cube or cuboid, and if I find surface adding a, so total surface area, this plus this opposite side, this plus this opposite side, this plus opposite side. So total surface area. This surface area we use find any field, or suppose any charge bounded by a Cartesian coordinates system. So how field crosses in a surface area. So we calculate the surface area and find then other components, electric field or forces. So this used in it. Similarly, differential volume.